Hello everybody. Today I will discuss about Lagrange's equation. Lagrange's equations. L- Lagrange's equations. The partial differential equation of the form PP plus QQ equal to R, or P del Z upon del X plus Q del Z upon del Y is equal to R, is known as Lagrange's equation, where P, Q, R are functions of x, y, z. So कोई सा भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म जो कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर और पी डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड बाई डेल इक्वल टू आर के फॉर्म में है, तो उस तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन, जहाँ पे कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स, वाई, जेड. Method of solving equation PP plus QQ is equal to R. Or method of solving Lagrange's equation. Lagrange's rule. Statement: the general solution of the linear partial differential equation PP plus QQ is equal to R, where P, Q, R are functions of x, y, z is given by phi of u v is equal to 0, where phi is an arbitrary function and u of x, y, z is equal to c1, v function of x, y, z is equal to c2 are two independent solutions of the auxiliary equations dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. This is known as Lagrange's solution of the linear equation. Proof: we have given that phi of uv is equal to 0,
we consider z as dependent variable and x and y as independent variables, so that del z upon del x is equal to p, del z upon del y is equal to q, del y by del x is equal to 0, del x by del y is equal to 0। यहाँ पे z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डिफरेंशियल के केस में जब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं तो हम दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं। del z by del x is equal to p, del z by del y is equal to q। क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 0 है और x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y 0 है। Now differentiating function phi of u is equal to 0 with respect to x, then we have del phi by del u is equal to del u by del x plus del u by del z into del z by del x। अगर इस फाई एक्स सो इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है डेल फाई बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वी इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स, which implies that del phi by del u by del phi by del v is equal to minus of del v by del x plus del v by del z into del z by del x by del u by del x plus del u by del z into del z by del x। After simplification we have this del v by del x plus p del v by del z upon del u by del x plus p del u by del z, क्योंकि p is equal to del z by del x है। In similar way, differentiating phi of uv is equal to 0 with respect to y, then we have del phi by del u upon del phi by del v is equal to minus of del v by del y plus del v by del z into del z by del y upon del u by del y plus del u by del z into del z by del y, which is equal to del v by del y plus q into del v by del z upon del u by del y plus q del u by del z। Therefore we have from two equations we have del v by del x plus p del v by del z upon del u by del x plus p del u by del z is equal to
del v by del y plus q del v by del z upon del u by del y plus q del u by del z. By cross multiplication, we have del u by del y plus q del u by del z into del v by del x plus p del v by del z is equal to del u by del x plus p del u by del z into del v by del y plus q del v by del z. After simplification, we have del u by del y into del v by del z minus del u by del z into del v by del y into p plus del u by del z into del v by del x minus del u by del x into del v by del z q is equal to del u by del x into del v by del y minus del u by del y into del v by del x. सो यहाँ पे याद कर सकते हैं इस तरह से, p जो है ये del z बाई del x है, तो p में del z बाई del x है, तो यह डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन है del x. सो यहाँ पे del x एब्सेंट है, इसमें del u बाई del y है और del v बाई del z है. फिर ऑल्टरनेटली del u बाई del z इंटू del v बाई del y, del y और del z और यह del z del y. इसी तरह से सेकंड टर्म में यह del z बाई del x, q इज इक्वल टू del z बाई q इज इक्वल टू del z बाई del y. सो यहाँ पे del y का टर्म एब्सेंट है. सो del u बाई del z इंटू del v बाई del x माइनस del u बाई del x इंटू del v बाई del z. इसी तरह इसमें भी आप याद रखने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं. ये कांस्टेंट टर्म है जहाँ पे z del z एब्सेंट है. ऑल्टरनेटली यहाँ del y del z है, del z del x है और del x del y है. हर कोफिशिएंट में, यहाँ p के कोफिशिएंट में del x एब्सेंट है, q के कोफिशिएंट में del y का एब्सेंट है और यह कांस्टेंट टर्म r में del z एब्सेंट है. सो ये इक्वेशन है which implies that p plus q is equal to r, where p is equal to coefficient of small p. here कैपिटल P स्मॉल p का कोफिशिएंट है, इसी तरह कैपिटल Q स्मॉल q का कोफिशिएंट है और कैपिटल R इधर ये कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड. Thus, phi uv is equal to 0 is the general solution or integral of the equation pp plus qq is equal to r. सो यहाँ पे हमको मिला जो pp प्लस qq इज इक्वल टू r, इस इक्वेशन का phi uv इज इक्वल टू 0 ये जनरल सॉल्यूशन है. We now proceed to obtain u and v for substitution in phi
uv is equal to 0. Consider u of x, y, z is equal to c1 and v of x, y, z is equal to c2, where c1 and c2 are arbitrary constants. On differentiation, we have du is equal to 0 and dv is equal to 0. Or del u by del x into dx plus del u by del y into dy plus del u by del z into dz is equal to 0, and del v by del x into dx plus del v by del y into dy plus del v by del z into dz is equal to 0. Now solving for dx, dy and dz, then we have by cross multiplication method dx by del u into del v by del z. इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, तो यह अगर dx है तो ऑपोजिट diagonal elements will be multiplied. So here del u by del y into del v by del z minus of del u by del z into del v by del y. Similarly, dy by del u by del z into del v del x minus del u by del x by del v del z is equal to dz by del u by del x into del v by del y minus del u by del u by del x minus del v by del y minus del u by del y into del v by del x. Since before we see that p is equal to del u by del y into del v by del z minus del u by del z into del v by del y, q is equal to del u by del z into del v by del x minus del u by del x into del v by del z, r is equal to del u by del x into del v by del y minus del u by del y into del v by del x. Therefore, dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r from the previous equation. Thus, we see that if u is equal to c1, v is equal to c2 are two independent solutions of the differential equations dx by p equal to dy by q equal to dz by r, then phi of u is equal to 0 or u is equal to fv is the general solution of equations pp plus qq is equal to r. Equations dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r are known as Lagrange's auxiliary or subsidiary equations.
Thank you very much for watching this video, and please don't forget to subscribe my channel.